Time for another used car video and this time we are here with the budget of 5 lakh rupees. 5 लाख रुपये बजट में आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है. कौन से आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं? वी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन व्हिच इज द मारुति अर्टिगा. For a budget of 5 lakh rupees, you'll get a 2012 or a 2013 Ertiga very easily. And market में बहुत सारे options available. You'll get petrol, diesel, everything. But the diesel cars will be heavily abused. तो आपको वो अगर लेनी है तो ठीक से चेक करके लेना है. But petrol में there are a lot of safe options available. And out of LXI, VX and ZXI, I will personally recommend only ZXI. तो अगर आपको वो ZXI मिल जाए अच्छे प्राइस पॉइंट में, don't let the car go. A lot of cabbies still use that car, तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स का कोई इशू है नहीं, मेंटेनेंस का कोई इशू है नहीं, एंड द कार इज वेरी रिलायबल एंड कंफर्टेबल ऑल्सो. तो अर्टिगा इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन फॉर 5 लाख रुपीज. एंड सेकेंड कार इज एक्चुअली द बिगेस्ट राइवल ऑफ द अर्टिगा बैक इन द डे, द होंडा मोबिलियो. नाउ फॉर अ बजट ऑफ 5 लाख रुपीज यू गेट बोथ द पेट्रोल एंड द डीजल मोबिलियो इजीली. एंड दोनों में 1.5 लीटर इंजन अवेलेबल था. एंड माई पिक आउट ऑफ द टू वुड डेफिनेटली बी द डीजल, बट 1.5 पेट्रोल भी काफी अच्छा इंजन है. ऑफकोर्स होंडा सिटी के साथ शेयर किया जाता था. एंड द मोबिलो इन जनरल इज अ वेरी नाइस ऑल्टरनेटिव टू द अर्टिगा. नाउ द मोबिलो शेयर्स इट्स डैशबोर्ड विद द होंडा अमेज, तो कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है. सो इफ यू वांट समथिंग मोर प्रीमियम, स्पेंड 1 लाख मोर एंड बाय द होंडा BRV. बट ओवरऑल अगर आपको 4-5 लाख रुपए के बजट में 7 सीटर चाहिए, देन द अर्टिगा एंड द मोबिलियो आर योर बेस्ट ऑप्शंस बिकॉज दे आर वेरी रिलायबल एंड ओवरऑल दे जस्ट ऑफर अ नो नॉनसेंस एक्सपीरियंस. नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्स एंड वी ऑफ कोर्स हैव माय फेवरेट कार्स अगेन, द Volkswagen Polo, Vento and Rapid. अब मैंने ये सब गाड़ियों की बात पहले भी कर ली थी 3 लाख रुपए के बजट में के वीडियो में, बट 5 लाख इज एक्चुअली अ बेटर बजट टू बाय वन ऑफ दीज कार्स बिकॉज यू कैन बाय वन ऑफ द बेटर वेरिएंट्स अवेलेबल. 5 लाख रुपए में अगर आप पोलो लेने जाएंगे देन यू विल गेट द GT TSI और द GT TDI, एंड इफ यू बाय द Vento यू विल गेट द 1.2 TSI और इवन द TDI डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट. एंड रैपिड लेने जाएंगे तो उसमें भी आपको डीजल ऑटोमेटिक 5 लाख रुपए में मिल जाएगा. द नेक्स्ट कार इन द लिस्ट इज द Honda Jazz, द न्यू Jazz which came out in 2015. ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 5 लाख रुपए में एंड यू कैन गेट द 1.2 लीटर iVTEC और द 1.5 लीटर iD-Tech वेरिएंट्स फॉर दिस प्राइस. द Jazz इज वेरी स्पेशियस, वेरी कंफर्टेबल, चीप टू मेंटेन एंड ओवरऑल अ फैंटास्टिक पैकेज बाय Honda. तो अगर आपको ये लेनी है, प्रेफरेबली बाय द डीजल वन बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंट एंड ऑल्सो हैज अ लॉट मोर पंच देन द 1.2 iVTEC. After the Jazz, we have its bigger sibling, the 4th generation Honda City, which can again be yours for 4-5 lakh rupees easily. इसमें भी आपको बहुत सारे variants मिल जाएंगे, SV, V, VX, all of these. And if you're buying the petrol, try to buy the manual variant if you want something which is fun to drive. And of course, you can get the CVT if you want something which is more relaxed and convenient. But CVT variants command a slightly higher premium compared to the manual variants, especially the VX CVT variant. अगर आप manual ले रहे, then you can get the SV, V और VX easily. CVT में भी SV variant available है. And if you're buying the diesel, only manual is available, but that is also very efficient. But the diesel cities are known to be a little more rattle prone and they are also heavily abused because of their more efficient nature. So city is actually a very strong option in the 5 lakh rupee budget. Now we have one more sedan in this price bracket and that is the biggest rival of the Honda City. Back in the day, the Maruti Ciaz. The Maruti Ciaz is very spacious, very comfortable and back then it came with a 1.4 liter petrol engine or a 1.3 liter diesel engine. दोनों आपको मिल जाएंगे ये बजट में, but the diesel will again have a very high running. तो देख लीजिए अगर आपका रनिंग इतना ज़्यादा है नहीं, you can get the petrol variant and try to buy one of the top variants of that car ताकि आपको सब features मिल जाए. The Ciaz is very easy to maintain and overall it is a no-nonsense sedan. The next on the list is a premium hatchback, the Maruti Baleno, which came out in 2015. It came with 1.2 liter petrol, 1.3 liter diesel engine options. दोनों आपको मिल जाएंगे ये प्राइस ब्रैकेट में. Both the variants are quite fun to drive and back in the day the petrol used to come with a CVT unlike the AMT that we get today and the diesel had only a manual option. The Baleno was quite fun to drive, looked nice and was actually a better alternative to the Swift. The next on the list is the Maruti Ignis, which is a peppy little hatchback and a nice alternative to the Swift and the Baleno. Its resale value is not all that great because of its quirky design, but you don't need to worry because the platform and the engines are shared with the Swift and the Baleno. तो इसमें आपको ये बजट में पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे. मैनुअल AMT both are available with both the engines. Big variety is available and you can buy whatever suits your needs. The car is very reliable and decently fun to drive. Now we have something unique. We have the Ford Figo and the Ford Figo Aspire, the new models which came out in 2015. Now these came with a 1.2 petrol which was very lethargic or a 1.5 diesel which was a rocket. तो अगर आपको ये लेनी है, get the diesel variants and for 5 lakh rupees you'll get 2017 to 2019 models very easily and these cars offer a lot of bang for your buck.
The next car in the list is the Tata Tiago, which came out in 2016. It came with petrol diesel engine options, but my pick would be the diesel engine because of its peppiness and the fuel efficient nature. 5 lakh is a decent budget to get yourself a Tiago. The car is built very strongly and drives decently well. Options भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में. Now we have an SUV in the list, and that is nothing but the Mahindra XUV 500. Now the early batches of the XUV 500 did have a lot of niggles, but you can get the 2012 to 2014 models for as low as 4 to 4.5 lakh rupees, and for that it is decent value for money. अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको ठीक से चेक करनी है so that there are no electronic niggles in that car, and of course there are a lot of options available in the market, तो आप ठीक से चेक करके ले सकते हैं. And now coming to the last car on the list, we have the old Mahindra Scorpio. For a budget of 5 lakh rupees, you will get the 2013-2014 models easily, and इसके भी बहुत सारे options available है. Now it came with a reliable diesel engine, but the interior was not all that great, and even the ride quality was subpar. तो अगर आपको SUV का कोई specific purpose है, then only you can buy the old Scorpio. Otherwise, there are a lot of better options available in the market right now. So this was a list of the best used cars that you can buy for 5 lakh rupees in the market today. A wildcard entry is the Mercedes W204 C-Class and the BMW E93 series. Both of these are amazing entry-level German sedans. You can buy for 4.5 lakh rupees, but उसके लिए आपको थोड़ा एक अलग सा risk appetite होना चाहिए, उसको maintain करके restore करके drive करने का. So if you have that, you can buy one of these. या तो अगर आप दूसरी को लेना चाहेंगे, बताएं मुझे नीचे comment section में.